Hello and welcome. Good evening. Hope you all are doing wonderful and welcome to this special Saturday evening where we are going to talk about the budget, the current stock market scenario and how it can turn after the budget which is to be presented on 1st February by our Finance Minister Ms. Nirmala Sita Raman, right? So it's going to be a very interesting session. Let's look from the perspective of what has really happened in the past budgets, right? And what kind of stock movements were observed in the past. If you look at the previous year's budget, which was presented on 1st February 2021, we saw 4.74% of gain by Nifty. And the budget, of course, was presented by none other than Sitaraman, madam. Okay. February, in fact, she had presented 3 budgets in the past. This will be the 4th budget she will be presenting. And the budget she presented in 2020 saw minus 2.51% downside, right? And of course, the 2019 budget was not on 1st February, but it was on 5th July 2019. And that also saw a negative candle, a red candle by minus 1.14% drop in Nifty. So that's what Mrs. Sitaraman had been doing for last 3 budgets, and we hope it will be good in this budget, right? We hope to see large green candle. And before that, almost 5 budgets were presented by Mr. Arun Jaitley. More or less, the response was 0.23% minus side to 1.81%. And in between 1st February 19, Mr. Piyush Goyal had presented a budget that saw 0.58% upside. Before that, Mr. Chidambaram was the finance minister. In February 14, he had presented, it was 0.41% upside. So that's how the budget had been so far. And most of the time, we have seen there is a pre-budget rally, but in couple of times it's been observed that, there is a drop in the stock market before the budget, and then from after the announcement of the budget, then there is a good rally for next 1 month or so. So this year we have seen a good drop of last 6-7 sessions where Nifty tried to reach at its highest, quite close to its highest, right? It was almost 18,350 and the high was 18,604. So both close. Of course, if you check out on my last videos and if you've been consistently following it, then you might have seen I have said that that's a distribution zone also, and the should investor would keep on booking profits in the distribution zone, right? Now let's look at of course today as it is a special evening where we're going to look at the budget aspect of it. It might take a little longer to set the pace of this question answer session, right? Let's look at what's playing in our market. Let's see what's there in pro and what are the consequences, right? So in favor of a good budget, there is a excellent corporate results, right? Q3 ke results aa gaye hain, and amazing results still some companies are announcing, but there is a good growth in terms of sales, in terms of profits, in terms of new growth. Second, the best part is we have seen the highest GST collection of 1.3 lakh crore. So despite being through the pandemic, and yet the government has collected best possible GST, right? That's the good news for the government, because अगर government के पास में collection होता है taxes के through या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू या डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट की जो कंपनीज प्रॉफिट बना रही उनके थ्रू, देन ओनली गवर्नमेंट कैन spend money, right? Otherwise, where from the government will spend money? So that's one good aspect, that GST collection is a record high. Third good part is advance tax, right?
So you know that the corporates as well as high income individuals pay advanced taxes, right? So Q3 के जो advanced taxes हैं, that's also at a record high of 54,445 crore. That's again another record. That means even Q4 के लिए भी आपके expectation अच्छे होंगे, right? So that's a good part from the HNIs as well as from corporates. That means सीतारमन जी के पास में ज्यादा बजट होएगा स्पेंड करने के लिए, राइट? सो एडवांस टैक्स में द ग्रोथ ऑफ एडवांस टैक्स इज ऑलमोस्ट 90%, फ्रेंड. दैट्स अगेन अ रिकॉर्ड, राइट? Another good news for which is in favor of a good budget is rebound in economic growth, right? So that's another positive aspect because last 1.5 साल 2 साल में जो भी पेंडेमिक था उसके वजह से ग्रोथ डिले हो गई थी. लॉट ऑफ स्टिमुलस, लॉट ऑफ मनी हैज टू बी doled out. So despite that we are going through a good economic growth. That's another good aspect. Another good news is we have 40 plus unicorn startups which have been doing excellent job. So अगर नए organizations आते हैं, नए companies आते हैं, startups boom करते हैं, तो definitely that also adds to the economic growth as well as the job opportunities, new job opportunities. So that's another aspect. And one more thing you might have observed, this was the year, the year gone by was the year of IPOs, right? So can you imagine the kind of money got mobbed out of the marketplace? It's close to 1 lakh crore जो कि IPO में investment हुआ. And don't forget, LIC IPO is yet to come, right? That's the father of all IPOs, or rather disinvestment के perspective से भी अगर हम बात करेंगे. So that's also something on card. So a lot of pros. But then there are negative aspects also, what the market is dealing with, the countries or the globe is looking at, right? So so what our market is facing, right now, FIIs consistently selling, right? If you look at more than 140 lakh crore worth of equities have been sold in cash market by FIIs. And इवन अगर आप बात करेंगे जनवरी के मंथ की, लास्ट के 3-4 डेज की भी अगर आप बात करेंगे, you will see 3,000-4,000 crore of the sales. So it's literally disheartening because see, प्राइस को सस्टेन करने के लिए, मार्केट को सस्टेन करने के लिए अच्छे फंड फ्लो की जरूरत होती है, इनकमिंग की जरूरत होती है फंड्स के, न कि बाहर जाने की. But the good part is of course our HNIs and retail investors are consistently pumping through the either SIP route of mutual funds. That's close to 11,000 crore per month. So that's a good compensation for FIIs money. And another negative aspect what the market is facing right now is a Russian-Ukrainian war-like situation at the border. Russia has deployed almost 1 lakh army, and Uncle Sam की तो commentary चालू ही रहती, right? So US is again poking its nose in the scenario, and that gives a jitter to the market because the markets always look at the geopolitical or economic stability, right? So that's very important aspect. So ये भी market के favor में नहीं है. दूसरा, what is not there in the favor of the market is the US monetary tapering, right? And interest rate बढ़ाने की बात हो रही. So there are two factors which have been pointed out by Fed. Fed has been saying for quite many weeks that it will be tapering the easy money. That's one way of reducing the outflow of the money from the government, right? So obviously monetary policy tight होएगी तो fund flow market में कम हो जाएगा. Then they said that in this year there could be 3 to 4 times interest rate hikes. So that means even अगर एक बार में 0.25% होता है तो we talking about US में 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का. सो 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है जहां पे इन्फ्लेशन है. एज ऑफ नाउ तो यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा है, बट अदरवाइज यूएस में इन्फ्लेशन काफी कम होता है, 2-2.5% के आसपास. सो इफ यू रियली लुक एट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, अगेन द मनी विल फ्लो इन द यूएस इफ द इंटरेस्ट रेट कीप ऑन हाइकिंग.
was reading an article today. They said maybe there might be 5 rate hikes, so 1.25%, right? So I think Morgan Stanley ki baat hai ye, what they were saying. I think I'll have to get recollected my data properly. But so इंटरेस्ट रेट अगर यूएस में इंक्रीज होते हैं तो फंड फ्लो फर्दर वहां पे बढ़ता है और हमारे यहाँ पे कम होता है, तो दैट्स आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ आवर मार्केट, राइट. अच्छा, दूसरा एक another scenario which is not in our favor is crude oil. Brent crude oil is now $90 per barrel. Generally 65-70 तक we say it's okay, we can manage that, right? क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो हमारा इंपोर्ट है उसमें ऑलमोस्ट 80% हमारा जाता है क्रूड और एनर्जी रिलेटेड आइटम्स को इंपोर्ट करने में. सो दैट्स अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ मनी, राइट. सो इसकी वजह से रुपीस कमजोर हो जाए, तो दैट्स आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ आवर मार्केट. जैसे भी कभी भी अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सो दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ आवर इकोनॉमी. सो अगर गवर्नमेंट ज्यादा पैसा खर्चा करेगी तो ऑब्वियसली आपको सहूलियत कम दे पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कम कर पाएगी, बजट में कम कर पाएगी, या फिर डेफिसिट बढ़ेगा, बैलेंस शीट चेंज होगी, या बैलेंस शीट विल नॉट बी फेवरेबल टू द कंट्री, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो ऑयल प्राइस ऑलरेडी $90 पर बैरल हो रहा है. On top of that, last week we saw Yemen's Houthi movement, right? So they got internal factions. They have launched a missile attack in UAE. Now, you know that GCC countries have a organization called OPEC, right? They are the oil producing countries, and they decide कि output कितना होएगा, right? Output कितना मतलब supply कितनी होगी, supply कितना मतलब price decide होता है वहाँ पे, right? So this is also not a very good scenario, because if Saudi Arabia gets involved in this, then again that's not a very good scenario for the stock market, right? So that is also not in favor. Apart from that, now मार्केट को ऊपर जाने के लिए जरूरी है कि फंड्स फ्लो होए मार्केट में, राइट. नाउ जब भी आईपीओ आते हैं तो फंड आपके सक आउट हो जाते हैं. दैट मींस अगर एलआईसी का आईपीओ आता है तो द चंक ऑफ मनी पीपल विल बी, लोगों के पास में मनी लिमिटेड है, राइट. तो अगर किसी को जो स्पेशली रिटेल वाले हैं उनको पैसा चाहिए तो व्हाट दे विल डू, दे विल सेल द स्टॉक and they would try in IPO of LIC. So a lot of money will get stuck up for 10-15 days जब तक कि वो allotment नहीं हो जाती, right? So that is also a matter of concern. Apart from the major concern is also elections in 5 states, right? So in February we will be seeing the elections happening, and that is going to weigh out on the market. So keep an eye on all these factors, the pros, the cons. So दोनों चीज है, दोनों चीज के साथ में बैलेंस बनाना है, and you have to make a strategy how you can still be in the market, which are the sectors. So we'll be talking about at the last के जो 5-7 मिनट होंगे उसमें हम बात करेंगे कि भाई ये बजट से मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये बजट से कौन से सेक्टर को फायदा हो सकता है. That we will be looking at definitely at the end of this session. Let me start taking your questions now. All right, so warm welcome and good evening to all of you who have joined late. Let me start taking your questions, right? All right, so पहला सवाल हमारे प्रमोद जी का है. I see many of you come very early putting up questions. That's so warming, so overwhelming to see that. Finolex Industries इन्होंने बात किया है. Let me open a chart of Finolex, right? But before that, let me share the market chart, right? So interesting है ये एक statistics I'll share with you before Pramod I take your question. My apologies for delaying answer to your question. Definitely I'll answer that part, but before that, now if you look at the Nifty chart, as I was talking about last 7-8 sessions, we saw a good sellout, but now market seems to be bouncing back, except the Friday sellout. Friday weekend होता है, थोड़ा बहुत selling रहती, but the market made a higher high and higher low. More or less close वहीं पे हुआ है जहाँ पे हमारी Thursday की closing थी. So there was not a fall, but at higher level again FIs की sellout यहाँ पे हमको देखने को मिली है, right? So if you look at Nifty, now Nifty is standing at 17,102,
right? Nifty का जो high point है friends, that's 18,604. So if we see Nifty reaching the upside, we can say that Nifty is down by 8% from its all-time high. अगर बजट बहुत अच्छा आता है, so you can expect 2 to 3%, upside within a day or two, and then it may scale up. Upside हमारे पास में करीब करीब 9% की होगी. So when you are thinking of taking a position, always understand that कहाँ upside ज्यादा है, कहाँ upside कम है, right? And what kind of sectors are booming up. And so ये निफ्टी की सिचुएशन है. निफ्टी इज स्ट्रगलिंग इन अ जोन. इफ यू सी, दिस इज अ कंसोलिडेशन जोन. ऊपर जाते वक्त इसने काफी स्ट्रगल किया है. पिछली बार जब ये नीचे आ रहा था तब भी इसने यहाँ पे स्ट्रगल किया था, एंड दैट स्ट्रगल Nifty has not come out of it. So good budget can definitely give it a jerk or a upside move, and Nifty can come out of that movement. Now, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो इन अ सिमिलर सिचुएशन. अगर आप देखेंगे ये कंजेशन जोन है, ये भी कंजेशन जोन है इसका, एंड ये ट्राई कर रहा है. इट्स स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी. Now, if we look at the highest point of Bank Nifty, it was 41,830, and Bank Nifty trading at 37689. That means there is a 4,141 point downslide in the Bank Nifty. रफली 10% डाउन है ऑल टाइम हाई से. अगर आप नीचे से कैलकुलेट करेंगे तो वी हैव 11% अपसाइड till it touches its all-time high. Now you might have seen PSU banks are rallying up, right? So whatever is happening in whichever the sectors, you can expect there is something brewing up in that sector. That's where you will see some or other announcement happening. So you might see the PSU banks might be leaping upside. अच्छा, दूसरा एक काफी टाइम से हमारी एक बात हो रही थी कि द गवर्नमेंट वाज सेट टू मेक अ बैड बैंक, जो लोन्स वगैरह हैं, एनपीएज हैं, उनकी केयर करेगा. सो नाउ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी ट्रांसफर 50,000 करोड़ टू फॉर्म दैट बैड बैंक, राइट? सो ये डेवलपमेंट हो गई है. so, इसका भी एक इम्पैक्ट आपको बैंक्स में देखने को मिलेगा. स्पेशली पीएसयू बैंक में डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा. आप वॉच आउट पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा. आपको अगर ध्यान हो तो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड सम ऑफ द बैंक stocks in our STI group, right? That's the Praj Systematic Traders and Investors group, where we share our studies. We don't run much on the WhatsApp because वहाँ पे इतना content write करना मुश्किल होता है. But in this group, which is a Facebook group, you can send your request. We'll accept that, and you can see that there are a lot of information being shared here, right? So काफी analysis रहता है जिसमें आपके चार्ट भी शेयर्ड रहते हैं, एज वेल एज उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी उन कंपनीज का यहाँ पे शेयर रहता है कई बार. सो दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू यू. तो कीप एन आई ऑन इट बिकॉज इट इज बाय द टाइम अगर आप बात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे की, तो देन यू वुड सी एक सैटरडे में तो अच्छा खासा मूवमेंट हो गया है, राइट? सो you would see the kind of results these stocks are producing time after time. 40%, 50% within few months. That's the kind of opportunities which are being shown up by the market, right? So ये भी एक अच्छी चीज है. So bank Nifty. Now coming back to the time when let's say around 3-4 months जब भी बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रही थी around 34,500 के आसपास में, that time I told you that the banking is the sector where you would be getting good opportunities to make 15% के आसपास में profit आपको मिलेगा by the time it touches all-time high. But then from there Bank Nifty rallied and we saw 25-30% का return आपको banking stock में देखने को मिला. Now again 12-15% का रिटर्न आपको बैंकिंग सेक्टर में मिलेगा. लुक आउट एट द बेस्ट बैंक्स व्हिच आर फंडामेंटली स्ट्रांग एंड बीटन डाउन. स्पेशली अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, they haven't seen a kind of up move which other banks have seen. Of course there are other banks as well in the line which you can find very very interesting. So this is the point I wanted to share with you, right? So that's what is happening on Bank Nifty and Nifty. Now मैं प्रमोद का सवाल ले लेता हूँ. अदरवाइज क्या होता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं समझेगा तो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि अपसाइड कितनी बची हुई है हमारे पास में, एंड वेयर वी कैन टेक आवर पोजीशंस, राइट? सो लेट्स टेक अप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, राइट? सो आई थिंक फिनोलेक्स का हमारे पास में चार्ट होना चाहिए, है या नहीं है? तो लगाना पड़ेगा. लेट्स सी, फिनोलेक्स का चार्ट नहीं है.
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको फिनोलेक्स के फंडामेंटल देखने पड़ेंगे. यू ऑल्सो नीड टू लुक एट लॉट ऑफ कंपनीज हैव रन अप वेरी फास्ट. तो अगर कंपनी एक्सपेंसिव हो जाए तो भी आपको अवॉइड करना है, राइट? ऐसा नहीं हो कि आप एक्सपेंसिव कंपनी में पोजीशन ले लो. लेट मी Finolex Industries, Finolex Cables, right? Finolex Industries, there are two companies, okay, separate companies. So Finolex Industries, 55 rupees की book value है, 170 पे trade कर रही है, ROC, ROE is excellent, P is 12, 27.7 का industry का P है, sounds to be good. OPM is around 21%, that also looks good. अगर perspective देखें इसका fair value का around 200 रुपए तक के आसपास का इसका fair value है. The stock has been splitted many a times and 1.18% का dividend देती है ये stock, right? So that way it sounds to be fairly good, right? So now manufacturer of PVC resin and largest producer of PVC pipes, that's what it is doing. So now if you look at many a times I've spoken about, if you want to participate in the कंस्ट्रक्शन ग्रोथ, राइट? सो एक तो तरीका है कि आप वो जो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में उनके स्टॉक्स खरीद लें, या उन प्रोडक्ट्स के स्टॉक खरीदें जो ये कंस्ट्रक्शन कंपनीज खरीदती हैं. एंड ये प्रोडक्ट्स के स्टॉक खरीदना सेफ है रादर देन ये construction companies. Many of them go bust, many of them have got the corporate governance issues, many of them have got a huge debt. So that is not a good sign for these construction companies, right? अगर now शेयर होल्डिंग पैटर्न के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखें तो 52% प्रोमोटर्स हैं, FIs ऑलमोस्ट 5% है, दे हैव इंक्रीज्ड देयर पोजीशंस, DIs ऑलमोस्ट 10% के आसपास में, पब्लिक है ऑलमोस्ट 31%. तो एक स्टेबल रेशियो है यहाँ पे. सो स्टॉक इज फेयरली प्राइस्ड एंड स्टेबल लगता है, राइट? नाउ अगर हम इसको चार्ट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो लेट मी सी कि फिनोलेक्स का चार्ट क्या दिखा रहा है. And let me also share that chart with you, right? Give me a minute. Finolex का chart देख लें. तो Finolex has been dropping day by day, right? So let's see कि अब ये कहाँ पे जा सकता है, क्या जोन है प्रमोद जहां इसको खरीदा जा सकता है. So it's trading at 170 and this is a very good free fall, right? And you can see that this zone where it is right now from 160 to watch out the stock in this place. ठीक है, मैं भी इसको सेव कर लेता हूं. Finolex Industries, क्योंकि it's coming towards a very good level. So अगर हम इसको मॉनिटर करते हैं it might give us good opportunity, right? So 160 का ये लेवल है. अगर देखो ये लेवल टूटा ना तो देन अगेन इट विल हैव अ फ्री फॉल, लेकिन बजट सामने में है. देन 140 का लेवल है इसका, वॉच आउट. अगर 160 के आसपास में ये सस्टेन कर गया तो ठीक है, नहीं तो 140 पे आएगा. 140 शुड बी गुड प्राइस. क्यों? 148 की 55 की इसकी बुक वैल्यू है. अगर ये आपको 140 में मिलता है अराउंड 2.25 गुना, which is fairly good, right? तो अच्छी प्राइस रहेगी वो खरीदने के लिए. So watch out on this side. ठीक है. सेकेंड आपका है जुबिलियंट फूड. जुबिलियंट का लेट्स सी चार्ट है क्या. जुबिलियंट फूड, let's look at that chart as well, right? Okay. So there is a gap. So Jubilant Food has almost covered that gap. It was a novice gap. No, it was a pro gap. ठीक है. So मेरे ख्याल से Jubilant Food में ना अभी भी थोड़ा डाउन साइड दिख रही है मेरे को. बेरिशनेस है यहाँ पे. वॉच आउट ऑन द डाउन साइड. ओके, तो डाउन साइड में क्या टारगेट हो सकते हैं, कहाँ पे आपको वॉच आउट करना है, ये एक बार देख लें. Let me draw that level for you, right? And
वॉच आउट 3020 का प्राइस, अगर 3020 का प्राइस टूटता है तो देन यू विल गेट समवेयर अराउंड अ लेवल ऑफ 2814 से लेके इसको फिर संभलने के लिए जो लेवल है ना वो 2689 का लेवल है, मतलब तो 200 से 400 पॉइंट नीचे की तरफ भी जुबिलेंट जा सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो आपको समझ में आएगा जुबिलेंट फूडवर्क्स, ठीक है, आपको वो आएगा समझ में कि स्टॉक क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, इज इट एक्सपेंसिव। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड 130 रुपीज के बुक वैल्यू का स्टॉक है, मोर देन क्या कितना टाइम चाहिए, मोर देन 30 टाइम्स के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट करेक्शन के टाइम पे ऐसे स्टॉक में ज्यादा करेक्शन आएगा। इफ यू लुक एट 104 के पी पे ये ट्रेड कर रहा है, इट मींस व्हाट कि इस कंपनी में से 1 रुपए कमाने के लिए आपको 104 रुपए लगाना पड़ेगा, राइट? So that's very, very, very expensive. So downside is for sure there. And if you look from the perspective of fair value of this stock, it should be around 400-450 rupees. So वो perspective से भी ये stock काफी महंगा है, right? Now who might be selling their stake here is FIIs, right? Promoters 42% के आसपास में, and FIs were almost 40%. I'm sure next quarter में जब आप quarter 3 की इसकी डेटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि FIs have sold a good amount here, क्योंकि DIs के पास में बहुत ज्यादा माल है ही नहीं, यहाँ पे 11% है, वो स्टेबल बैठे हुए हैं, और पब्लिक के पास में 6% है, तो पब्लिक हैज इन फैक्ट इंक्रीज्ड अ लिटिल, सो FI ने बेचा और पब्लिक ने थोड़ा ही लिया हुआ है। सो मेरे ख्याल से होल्ड करें इसको, आपको अगर इंटरेस्ट है इसमें, लेट इट फॉल फर्दर एंड वॉच आउट दीज लेवल्स, एंड फ्रॉम हियर व्हेन इट रिटर्न्स इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 3500 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपका 4000 का होगा, तीसरा टारगेट 4600 का होगा, राइट? अभी बजट में क्या इसके लिए कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है कि ये फटक से रिवर्सल हो जाए? आई डाउट सो, बिकॉज फास्ट फूड वाली कंपनी है ये, राइट? आपका पिज्जा वीजा वाली कंपनी है, तो ऑब्वियसली उन कंपनीज के लिए बजट में बहुत अच्छे उम्मीद न करें, राइट? Nilesh Sompura is there. I'm sure Nilesh Sompura has got some or other good stock. But before that, let's take a question of Mr. Vijay Bhujbal, TCS and Pidilite. So TCS, now TCS, unlike other IT stocks, I was checking it today, in my homework, TCS. So unlike other IT sector stocks, even IT sector itself is down and drastically down है, right? खूब पिटा है, लेकिन TCS बहुत ज्यादा नहीं पिटा हुआ है, एक अच्छे जोन में है, सपोर्ट के जोन में है। अगर आप देखेंगे तो चैनल में चल रहा है, यू नो दैट आई एम अ चैनल ट्रेडर एंड चैनल इन्वेस्टर एज वेल। सो यहाँ से एक बाउंस बैक आपको टाटा कंसल्टेंसी में मिलेगा। मेरे ख्याल से जितनी पिटाई होनी थी आईटी की उतनी हो गई है, और या फिर आप इसको एक 150 पॉइंट और नीचे आते हुए देख सकते हैं। अंटिल 3400 तक विजय आप इसको खरीद सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। योर टारगेट शुड बी 4000, राइट? सो नो इश्यूज ऑन दैट फ्रंट। फंडामेंटली TCS is good, but it's an expensive stock, always understand that. So time to time correction यहाँ पे होते रहेगी। रही बात Pidilite की, Pidilite Industries, let's see Pidilite. Meanwhile Pidilite का ना एक काम करते, Pidilite has got excellent product line, but always expensive trade करता है ये, right? So 114 इधर more than 20 times, right? 99 का P है, 3 times P already है, it's commanding a premium, right? So if you are somebody who's a growth oriented investor,
definitely it is a value, but again it depends upon at what price you should be buying. मेरे ख्याल से अभी एक्सपेंसिव है ये स्टॉक, इसकी फेयर वैल्यू तो काफी कम है. My perspective personally is looking at value investments, मतलब अंडरवैल्यू हो जाए या एटलीस्ट एट पार तो रहे. तो I don't personally prefer to buy expensive stocks, right? एक्सपेंसिव स्टॉक का फिर यही रहेगा कि गिरना चालू होते हैं तो फिर it's very scary. So as of now it's below 50 days moving average Pidilite, and अच्छा सपोर्ट लेवल पे है ऐसे तो, बट सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे. वॉच आउट फॉर अ डे और टू. एंड अभी अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा तो पिडिलाइट इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, राइट? तो रियल एस्टेट का एक हिस्सा है ये भी. यहाँ पे आप 2-3 ये लेवल पे देखें, आप 2400 के आसपास के लेवल से आप मेरे ख्याल से बाइंग चालू कर सकते हैं इसमें. और नेक्स्ट जो लेवल होगा, अगर ये वाला लेवल टूटा ना तो ये 2200 के आसपास में स्टेबल होगा, जहां पे इसको 200 डेज का मूविंग एवरेज है, राइट? सो ऑलरेडी ये रन अप कर चुका है स्टॉक काफी. सो दिस इज वेयर यू विल सी it getting a support, right? When it gets to support here, your target again will be 2400 and 2800 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए फिर in that case, right? All right. Now नीलेश के सवाल हम देखते हैं. Sir, your view on penny stocks as investor are more or less investing any multi-bagger penny stock from your side? First and last time. नीलेश, आपको ना एक अच्छी रियलिटी बताता हूँ. Like I've been fortunate, and although I believe that कि लॉटरी जैसी चीज मेरे लिए बनी नहीं है, but there had been times I bought lottery ticket as a child 2 times, and तभी 10 रुपए का टिकट होता था, और नहीं 1 रुपए का टिकट होता था और उसमें हमको 10 रुपए लग गया. सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, राइट? तो 9 रुपीज का प्रॉफिट हो गया था. तो अगली बार मैंने क्या किया, अगली बार मैंने ना 10 टिकट ले लिए 1-1 रुपए के, राइट? सो 9 रुपए कमाया और 10 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, और वो 10 के 10 टिकट ना जीरो में चले गए, ठीक है? सो आई नो लॉटरी काम करती नहीं है, right? And you do not know the mechanism of lottery. So I believe these penny stocks are like lottery. Fundamentals का कोई और छोर पता नहीं होता है, वो बिजनेस क्या कर रहे हैं पता नहीं होता है. There are companies giving lower circuit, upper circuit, operators are driving them. Trust me, you and me have no time and understanding of these companies. There are almost 5,000 companies BSE में है, right? In fact, if I talk about 2015 के आसपास में 7,000 कंपनी, almost 2,000 shell companies and these operator companies are closed down thanks to मोदी जी. काफी strict action लिया गया था उनके ऊपर, but still almost 2,000 companies are still trading, जिनका बिजनेस ही नहीं है, जिनके के सरपाव नहीं है, and operators are driving them, greedy promoters are driving them. So मेरा ऑलवेज रिकमेंडेशन है स्टे अवे फ्रॉम पेनी स्टॉक्स, बिकॉज सर्किट लगना चालू होगा ना आप बेच पाओगे ना आप खरीद पाओगे, जहां पे भी हो आप फंस जाओगे. बेटर निफ्टी अपना एनएससी में हमारे पास में 1600 स्टॉक प्लस है, उसमें से स्टॉक ढूंढो. उसमें आपको जनरली पेनी स्टॉक्स नहीं मिलेंगे एनएससी में ट्रेड होते हुए, और अगर वहां पे भी मिलते हैं तो भी अवॉइड करो, ठीक है? And you don't need to be sorry, because inquisitiveness is important. I really appreciate you all the time. You bring very good stocks. So in fact मैं तो सोच रहा था आज नीलेश वापस एक दो अच्छे स्टॉक लेके आया रहेगा, maybe next time. But I very keenly watch out your stocks, and I do a lot of research afterwards on them. And couple of them I have seen they were good. I have also taken a position and I've got profited in that. So thank you for that. Right? BGR Energy for investment and Tata Power. All right. So तुम्हारे ही सवाल लेते हैं नीलेश. So BGR, I think BGR मैंने बीच में कहीं तो देखा था, कौन लेके आया था मुझे याद नहीं है. BGR का पहले फंडामेंटल देखते हैं, टेक्निकल में तभी हम अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे जब भी कुछ दम होगा. BGR Energy, manufacture capital equipments of power plants, petrochemical industry, refinery, process industry, turnkey balance of
plant. Okay, sounds to be business wise EPC है ये, जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट? नाउ 100 रुपीज के आसपास की सी बुक वैल्यू 89 में ट्रेड हो रहा है, दैट वे इट इज गुड, बट लुक एट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -8%, ROE, return on equity 41%. Now trust me Nilesh, I am not capable of finding out more detail inside what is happening here, why this company is giving negative return, right? So अच्छा, दूसरा देखो अभी इंडस्ट्री का P21 का, इसका तो P का कोई अता पता नहीं है, राइट? सेल्स पिछले 10 साल की -13% है, डेट देखो 2.67% है, फ्री कैश फ्लो मार्केट कैप से 2.5 गुना है। नाउ अगर इसके पास में 5 साल का फ्री कैश फ्लो इतना है, तो व्हाई दिस कंपनी इज ऑन डेट, व्हाई इट इज नॉट पेइंग द डेट, व्हाई इट इज पेइंग हैवी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट? सो आर द पीपल हु हैव लेंड इट, आर द प्रोमोटर्स रिलेटिव्स, बोलते हैं ना रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये हो रहा है क्या यहाँ पे? आई डू नॉट नो, एंड मेरे पास में कोई डिटेल नहीं है, और अगर मैं इसको एनालिसिस में जाऊंगा, इट माइट टेक फ्यू डेज टू डिग आउट देयर बैलेंस शीट्स, टू डिग आउट देयर मैनेजमेंट कमेंट्री, टू लुक एट द ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो इनके इंटर पार्टी ट्रांजेक्शंस होते हैं। सो व्हाई टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ डिटेल्स, जबकि क्लियरली मुझे यहाँ पे डेटा कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, तो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट माई एनर्जी इनटू इट, राइट? जहां प्रोस्पेक्ट ही नहीं दे। यहाँ पे सिंपल देखो, कॉन्सिक्वेंसेज देख लो सीधे सीधे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है इसका? माइनस में है 1, एंड इट इज क्लेमिंग इट हैज गॉट 1581 करोड़। सो आज अगर आपने स्टॉक ये खरीदा, तो इसका मतलब ये कैश में आपका हिस्सा है, बट डज दिस कैश एग्जिस्ट देयर? ठीक है, लेट्स सी नाउ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, 75 प्रमोटर के पास में, बाकी पब्लिक के पास में। FIs एंड DIs गुल है यहां, क्यों? स्मार्ट नहीं है क्या वो लोग? सो अवॉइड, ठीक है। टाटा पावर ऑल्सो मेरे ख्याल से काफी भाग चुका है, लेट्स सी। तो BGR का हम चार्ट देखने में विश्वास नहीं रखते। मेरा फिलॉसफी नीले सेम रहने वाला है, इधर उधर फंसने वाली कंपनी से दूर रहो, आपके पास में बहुत चॉइस है, बहुत चॉइस है। मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको, आपको खुद अपना टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस खुद करना है। देयर इज नोबडी गोइंग टू सेव यू फ्रॉम द मीडिया। टाटा पावर, टाटा पावर काफी फ्लक्चुएट हो रहा था इन बिटवीन। आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन टाटा पावर, ओके। Let's see the chart of Tata Power. And let's also see the fundamentals. 66, so 4 times almost trade कर रहा है ये। Stock P 49, Stock P has become expensive. Fair value के perspective से भी देखेंगे तो fair value से काफी ऊपर जा चुका है ये। Sales कुछ खास है नहीं। Now debt to equity ratio, I am very uncomfortable अगर debt to equity ratio 1 के ऊपर है तो 2.31, that gives me uncomfort. Again, almost 19.4 thousand crore का इनके पास में फ्री कैश है। Why they are not paying the debt? मैनेजमेंट वाइज ठीक है टाटा ग्रुप, बट सेल्स वगैरह है नहीं। People say it will become a multi-bagger, but I'm really not comfortable in this company. Okay? That's my personal view, and that is where I'm not invested also. 46% promoter, FIs 10% है, DIs 15% है, एंड पब्लिक 26% है। किस प्राइस पे FI और DI ने एंट्री मारी है, वो उस क्वार्टर में अगर आप देखोगे ना, जहां उन्होंने इंक्रीज किया है, तो आपको समझ में आएगा दे माइट हैव एंटर्ड मच अर्लियर, एंड दे आर ऑफ कोर्स दे आर एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो 26% थे 2019 में, वहां से ये FIs यहाँ पे खाली 11% रह गए, राइट? DIs 25% के आसपास में थे, 15% रह गए। सो definitely FIs and DIs know that what is happening in the company. Retail वाले के पास में कोई कोई अलादीन का चिराग नहीं कि वो कंपनी में क्या चल रहा है वो पता कर पाए, बस speculations है। So chart seems to be good if you want to take a momentum trade, but काफी हर्डल है इसको 260 से 270 के बीच में, राइट? तो ये यहीं पे झूल रहा है इसके लिए। सो टेक्निकल कॉल हो सकती है, बट फंडामेंटल कॉल नहीं है टाटा पावर की।
That's what is my view on this. So अतुल उमा का सवाल है, can you suggest some good stock in renewable energy for investment? So अतुल, see, you need to find out. ठीक है, there are many stocks in energy sector, but it's not a sector where you will get 10-15 years of record, right? And what way we are looking at the stocks, we are looking at the track record, history देख रहे हैं हम. Many a times you would see last 3-4 साल में कई कंपनीज आ गए, उनके डेटा सफिशिएंट नहीं एनालाइज करने के लिए. इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि उनका डेटा बिल्टअप होए, राइट? फिर आप बोलोगे हाँ सर इसमें तो अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी. अग्री, अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी, बट इट्स बेटर टू बी सेफर देन लेट. ओके, सो look at more of a conventional energy companies which are diverting or which are adding new dimension to their businesses. ठीक है, so let's say अभी Reliance है. Reliance is a stable business. Now they are getting into energy, right? Already they have said 75,000 crore का investment करेंगे अगले 5 साल में. So that's the kind of company I would be interested in. But is Reliance available at less than fair value now? Is it a value buying? It is a growth buying always, right? But in case of any adverse impact, right? अभी Reliance भी क्या कर रही है? क्रूड तो बाहर से ही ला रही है ना, तो क्रूड का प्राइस $90 हो गया है, तो वो इम्पैक्ट करेगा रिलायंस की अर्निंग पे. ऑफ कोर्स दे विल ऑफशूट दैट टू द बाइंग पार्टीज, बट स्टिल इट इम्पैक्ट्स, राइट? फंड फ्लो इम्पैक्ट होता है. सो in my view there are only few companies which you can think in that way. So थोड़ा research करें कि which are the companies which are getting into this business. Coforge earning was good, however the price declined, however taking support at 200 is SMA. All right, Sanjay Ture, let's see that Coforge. The Coforge, earlier it used to be NIIT, right? Coforge का अगर देखो फंडामेंटल देखोगे ना, ऑलरेडी वो एक्सपेंसिव में थी, इसके लिए हमने चार्ट भी नहीं लगाया, सेव करके नहीं रखा हुआ है. So trading more than 11 times, right? In fact, roughly 12 times आप बोल सकते हो. फ्री कैश फ्लो अच्छा है, आरओसी आरओई अच्छा है. अगर फेयर वैल्यू के पर्सपेक्टिव से देखोगे 1200-1300 रुपए की फेयर वैल्यू है स्टॉक की, राइट? नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाई इट इज फॉलिंग. आंसर इज वेरी सिंपल. Coforge. Answer is very simple. If anything is very expensive, profit booking आएगी. शेयर होल्डर्स कौन है, कौन बेच रहे हैं ये स्टॉक को, आपको उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखना पड़ेगा. बल्क डील होती है ना, वो देखनी पड़ेगी. 50% के आसपास में आपके promoters हैं. FIs were 41%, now they are only 19%. Now the data is showing that up, right? 16% से 20% में आपके DIs गवर्नमेंट है नहीं, पब्लिक है 10%. So somewhere somebody is selling the stock. Who's selling the stock at this point of time? देखो FIs की एक सेल लगी थी जो कि उनको इसके लिए करनी जरूरी थी, because they had to make their balance sheet, P&L, right? दिसंबर एंड तक उन्होंने इसके लिए किया. They are now continuously selling because they want to transfer their funds to other emerging markets. Maybe there is some taxation issue which government have not resolved and they want to prove to the government that they don't care about Indian market or whatever the reason. But stock सिर्फ वो पिटेंगे जो overvalued हो गए थे, right? So Coforge is one of the stock which is already trading 11 times. Now अगर आप ये देखोगे तो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे इसने लास्ट टाइम बाउंस बैक किया है और उसके ऊपर क्लोज हुआ है. दैट इज अ गुड न्यूज, राइट? लेट्स सी कि क्या इसके पास में और डाउन साइड है, क्योंकि अगर ये 11 टाइम्स ट्रेड कर रहा है
तो फर्दर डाउन साइड हो सकती है, राइट। यहाँ पे कुछ सपोर्ट नहीं है इसके पास में संजय। अगर ये फर्दर गिरता है ना तो इसके पास में जो सपोर्ट आएगा थोड़ा यहाँ पे है। कौन से लेवल पे? लेट्स ड्रॉ दैट लाइन। 3970 के आसपास में एक सपोर्ट है इसको, और ये सपोर्ट टूटा तो आपको सपोर्ट मिलता है 3300 के आसपास में, राइट। तो मेरे ख्याल से ये प्राइस पे अगर देखो आप इन्वेस्टेड हो, प्रॉफिट बुक करो। Nobody has ever become poorer by booking the profit. If you are not invested and you are thinking of buying, it's already expensive. There are better stocks even in IT which have also fallen down and they are at a very good support levels. So look at those prices. मेरे ख्याल से these are, I would prefer to buy it below 3000 level. Otherwise, I would not prefer to. Let me save this time this chart. Generally, I don't save these expensive chart because फिर उसमें एनालाइज करके भी उसको ना कोई मतलब नहीं है। Why to waste time, right? वो वाला है ना गाना, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। सो स्टॉक का भी वैसे ही है, जिस स्टॉक को लेना नहीं है उसकी एनालिसिस करके मतलब क्या है, ठीक है। ऑलराइट, Sonia Shah, good evening. Will this budget give boost to banking sector? I have position in most of the banks. Please share your views. Yes, Sonia ji. See, already there are things happening, right? A little while ago, I was talking about bad bank, right? That is जो NPAs हैं उनको खरीदने के लिए है। इसका मतलब है जो बैंक की NPAs है ये बैड बैंक खरीद लेगी और फिर उसके बाद में उसका रिजोल्यूशन करते रहेगी। बैंक का टाइम नहीं खराब होएगा उसमें, और बैंक को एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, तो एनपीए की प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, उससे बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी। सो ये ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। प्लस जो पीएसयू बैंक है डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट इज गोइंग टू इन्फ्यूज सम और अदर मनी or give them some other incentive. So that is again a positive point. Besides, as I was talking about in the beginning, bank Nifty has got more scope to come up to catch up with the all-time high. And banks have been very strong in last, अगर आप एक डेढ़ हफ्ते से भी देखेंगे, although the market fell, Bank Nifty also fell, but Bank Nifty is stronger than Nifty at this point of time, right? So be assured, you will get good time to book profit in bank. Many banks. In fact, I have given you a buying signal in Federal Bank, almost 30% up है वहां से buying price से. Then Bank of Baroda, बाकी के जो प्राइवेट बैंक हैं, ICICI होने दो, एक्सिस होने दो, HDFC, कोटक, सभी बैंक में हमने बाइंग की पोजीशन ली थी कुछ महीनों पहले, एंड दे आर गिविंग एक्सेलेंट रिजल्ट्स। सो मार्च से पहले आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी पर्सनल बैलेंस शीट भी बननी है और उसमें प्रॉफिट दिखने चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म गेन्स हुए चाहे लॉन्ग टर्म गेन हुए। ओके, ऑलराइट। नेहा जी का एक सवाल है मारुति सुजुकी। सो मारुति सुजुकी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। काफी सालों से स्ट्रगल कर रहा था मारुति, और अभी तो ब्रेकआउट दिया है, अच्छा ब्रेकआउट दिया है, राइट। सो इफ बट एक ही चीज है, यू शुड बी एबल टू हैंडल द वोलेटिलिटी ऑफ मारुति सुजुकी, राइट। एक ही दिन में 200-300 पॉइंट भी ऊपर नीचे जाता है। नाउ इफ यू लुक एट द ऑटो सेक्टर हैज गिवन अ ब्रेकआउट एंड सो हैज गिवन Maruti. Let me open the two charts together. And there is a disclaimer, I'm already invested in Maruti. From a very low level, those of you who are following me, I've given that call at 7,400 level, right? 8,400 का है, 8,600 का हमारा पहला टारगेट था, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, right? So you see, look at this chart, right? So you might be scared of the kind of volatility, एक ही दिन में 150, 200, 300 पॉइंट मारुति ऊपर नीचे चला जाता है। Now it may correct until where 8,200, 8,250 के लेवल पे, ठीक है। That means अगर 300-350 लेवल नीचे मिलता है तो still you can take more position. Your target will be 9,000 का पहला टारगेट है, 9,050 का, एंड दूसरा टारगेट है 9,500 का. So that's the target for Maruti.
स्टेबल कंपनी है, इंडियाज टॉप मोस्ट कंपनी इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। थोड़ा ये इसके लिए भी पिट गया था बिकॉज दे डिड नॉट अनाउंस मोर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. Tata took the lead in that. Tata launched those vehicles, and Tata Motors saw the appreciation in the stock prices, right? वो यहाँ पे नहीं हुआ है, but ये now Maruti is coming with the new models, SUVs it is bringing, and quality wise is excellent. Suzuki, it's a Suzuki company, Japanese है, so no doubt about that. The technology wise as well as the price wise, they are very good. So you can be assured of Maruti Suzuki. Okay. Sukriti Murthy ji पूछते हैं strategy for budget. See, budget day is always going to be volatile. The strategy on the budget day is keep quiet, listen to the budget, write down the points, the sectors which might get benefited from it. When the budget closes in a day or two, start buying. So budget के लिए वो strategy, unless until you are a trader. If you want to trade momentum of the budget, yes, there might be some sectors they go 10%, 20% up within a day. But if you are an investor, you don't need to worry for the budget. Just pay attention to your mindset that day, right? Make notes. So Rajiv is asking, all is fine? Yes, all is fine. Banking sector view मैंने already बोल दिया आपको. Federal Bank, Bank of Baroda का views मैंने मेरे STI ग्रुप में पोस्ट किया है मिस्टर राजीव, आप वहां से देख सकते हैं. और यूनियन बैंक डेफिनेटली वी विल लुक एट इट, राइट? सो बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड फेडरल बैंक आर डूइंग वेल. फेडरल बैंक का टारगेट शायद हमने 115 या 120 का दिया हुआ था. सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी मीट हो गया है. यूनियन बैंक वी विल लुक एट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. PSU banks have given a very good run, right? Bank of Baroda is giving almost 25% ROI from the time when we started taking position. Now, Union Bank में क्या हो रहा है? Union Bank has got multiple resistances here, although it tried to break out this zone, right? एक zone यहाँ पे है, दूसरा zone यहाँ पे. ये काफी मतलब बहुत strength नहीं है Union Bank में, although last 2 session का volume अच्छा था, right? Still RSI is below 60, Mr. Rajiv. So, and अगर आप ये लाइन को देखेंगे ना, ये ट्रेंड लाइन जो है, see this is the trend line which is topping it, right? तो ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली ना इस कलर में होनी चाहिए because it is a resistance, right? So not a very good condition. अगर ये खींच तान के आपको 50 या 54 में बजट के टाइम पर ऊपर आता है तो निकल जाए यहाँ से. इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो आपको कम से कम 20% ज्यादा रिटर्न देंगे. Get into that, that will be better, right? So Invest Money is asking my view on IEX and Zomato and Tata Power. Tata Power के बारे में मैंने मेरा व्यू दे दिया है ऑलरेडी. एंड रही बात Zomato की, so I think Zomato is substantially below its listing price, right? तो Zomato का चार्ट देखते हैं. फंडामेंटली बैंड बजी हुई है. दे आर इन्वेस्टिंग मनी लेफ्ट एंड राइट एनीवेयर व्हिच द बिजनेसेस. सी एक चीज समझो, जब ये आईपीओ आया था 72 से 76 की प्राइस में था और ऑफ कोर्स लिस्टिंग बड़ी शानदार हुई थी इसमें, और ये करीब करीब अभी वही जगह पे आ रहा है. 84 तक की प्राइस इसने टच कर दी है, राइट? कहीं पर भी इसमें स्ट्रेंथ आते हुए नहीं दिखाई दे रही है. नाउ on top of that, there is a news that they are going to invest few thousand crore in some industry, some sector, जिसका की और छोर नहीं. सी पब्लिक का पैसा है यार, पब्लिक का पैसा जमा किया हुआ है, and they are now going to experiment based upon it. Why you should think of buying such a stock? That's my point of view. Okay, so I'm not really keen on it, and looking at the strength, it's further making a downside move. यहाँ पे जो technical pattern दिख रहा है. So फंडामेंटल देखने का जरूरत नहीं बिकॉज इट्स जस्ट अ न्यू कंपनी, तो वैसे भी इसकी बैंड बची रहेगी. नाउ रही बात IEX की. IEX इज अ गुड कंपनी बट एक्सपेंसिव कंपनी, राइट? लेट्स सी सम ऑफ द फंडामेंटल्स हियर. 7 रुपीस की बुक वैल्यू 233 में ट्रेड कर रहा है. इंडस्ट्री का पी ऑलमोस्ट 26, 73 का पी डिमांड कर रहा है.
PEG के perspective से already expensive है, PE के perspective से it's almost more than 3 times, right? So again expensive है. Yes, it's making a very good operating profit margin. Debt नहीं है, that's good part of it. Free cash flow अच्छा है, and dividend तो खैर anyway कुछ खास देता नहीं है. If I calculate the fair value of this stock, it will not be more than 75-80 rupees. So in my view, that's very expensive, right? And it's trading 33 times of its book value. Now, my perspective of looking at the stock is very, very simple. Am I getting value in the stock? If not, why to take it? I don't have to be running behind every stock. IEX, Indian Exchange. Despite the split, it has not picked up the volumes, trading volume जिसको हम बोलते हैं. Let me see the chart. It's been a long time I've not seen the chart. Right? And there is a consistent weakness. अगर आप देखोगे तो it's a making a head and shoulder kind of pattern, and the downside is clear, almost 200 days का moving average. So those of you who know how to understand the patterns, right? So this is the pattern. Right, and that pattern has been broken. Now the downside is almost 50-60 minus. So downside is somewhere this. This is the level you would see this company reaching. Expensive पहले ही है, ये तो हमने देख लिया, right? So this is the level possibly where it will get a support. So watch out for this level. I'll still not be comfortable in buying it there, okay? But आपको मैं एक level दे रहा हूँ कि ये level तक तो ये आएगी, और बजट में भी कुछ ऐसा इसके लिए कुछ खास है नहीं. And if that slips from that level, then the next level will be your 135 के आसपास का level, right? So watch out these levels. I'm sure it should come down to those levels. 200 days ka moving average, which is around 190. When it falls further, it will be around 185. So that would be a good support. Baki, I would not have advised to buy it. By the way, isko main na red color deta hu because it's always a bearish pattern, right? All right. Hind Petro, जानवी जी का सवाल है भाई, हिंद पेट्रो. Let's look at the Hind Petro. Petro companies are little jittery at this point of time. Reason मैंने शुरू में ही explain किया, right? Unless until petro companies are in production of crude, right? Production वाले के लिए अच्छा ना, $90 हो गया per barrel, right? अगर कंज्यूम करते हैं क्रूड को तो उनके लिए यहाँ पे कॉस्ट बढ़ गई. Now this has made a very nice head and shoulder pattern, inverted है, और वो शायद करीब करीब पूरा भी हो गया. So there is a selling pressure. So let budget day pass, maybe थोड़ा कुछ इन लोग को रिलीफ मिले पेट्रो को यहाँ पे, तो in that case it will run upside. But stock is not weak. It's in range. It's consolidating, right? The target is 355. 350 to 355 का टारगेट है इसमें. So if you are already invested, no need to worry. Stock में दम है, strength है, and fundamentally तो there is no issue in the petro. Hindustan Petroleum. I'm also invested in, by the way. Okay, so fundamentally no issues. और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको वैसे भी 7.26% का डिविडेंड देता है, राइट? आरओसी आरओई एक्सेलेंट है, पी 4.75 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का 14 का पी है. सो अंडरवैल्यूड स्टॉक है डेफिनेटली. द फेयर वैल्यू इज मोर देन 650-700 रुपीज. तो कोई सरकारी कंपनी है, बड़े आराम से चलती है, सरकारी तंत्र ऐसे ही चलते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी. So have patience.
All right. So next question is from whom? Let me see. IEX मैंने बता दिया, अडानी पावर एंड टाटा पावर। टाटा पावर का बात कर लिया मैंने कमलेश, आपको खाली बच गया है अभी अडानी पावर का। अडानी पावर का फंडामेंटल्स देखते हैं। अडानी पावर आई सॉ फ्यू मंथ्स बैक इट वाज एक्सपेंसिव, राइट। सम डेटा इज नॉट अवेलेबल हियर, बट जो डेटा है उसके बेसिस पे अगर देखें तो 50% इसके पास में फ्री कैश है, लेकिन इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 3.94 का, विच इज आई थिंक रिसेंट पास में मैंने सबसे ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो इसका देखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो है, राइट। प्रो में कुछ नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस में ही ज्यादा है, नॉट अ वेरी गुड प्रपोजल। 75 प्रमोटर के पास में है, 11% एफआईज, डीआईज के पास में 5%, और डीआईज ने निकाला है यहाँ से अपना माल, और 8.5% है पब्लिक के पास में, राइट। सो अगर आपको अडानी ही, देखो दो चीजें हैं, अगर पावर सेक्टर ही चाहिए तो बेटर फाइंड आउट अनदर ऑप्शन। अगर आपको अडानी ग्रुप से में इंटरेस्ट है, देन देयर आर बेटर कंपनीज ऑफ अडानी ग्रुप, right? Adani Ports is much better among all the Adani Group companies. The price coming down below 700, 650 के नीचे आ जाए, बिंदास खरीदो। I keep on buying that on a dip and keep on selling. जब भी 800, 850 के आसपास में आता है ना, निकल जाओ वहां से, you will get at least good 100 rupees, 100, 150 rupees तक का रिटर्न देता है आपको। So that's a better way of trading if you want to trade swing trades, like 2-3 महीने के अंतर्गत में अगर आपको 20%, 15% का प्रॉफिट बनाना है तो अडानी ग्रुप से, if you have, otherwise then find out better company. My view on Tata Steel is much below than the fair value. You can go long, there is no issue. You will have I have a positive view on metal sector, but now I'm not overweight. Metal sector is a cyclical. जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिमांड है, आई एम श्योर नेक्स्ट 1 year to 1.5 और 2 year तक गवर्नमेंट उस सेक्टर में ध्यान देगी, बिकॉज उनको रोजगार भी क्रिएट करने हैं, एंड एट द सेम टाइम दे आल्सो नीड टू शो द परफॉर्मेंस, राइट। तो रोड्स बन रहे हैं, गडकरी जी का आप इंटरव्यू देखते रहते होंगे, यूट्यूब में काफी छाए रहते हैं वो भी, और lot of projects are coming up. So steel का consumption होने ही वाला है, metal sector will shine, but only thing is right now it's going through the correction and consolidation phase. Once it is out of it, then definitely it will again go upside. कम पोजीशन बना के रखें, जैसे ही अगर ये अगर चार्ट के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं तो लेट्स से टाटा स्टील का ही अगर हम it has stopped responding right now. टाटा स्टील का ही अगर हम चार्ट लगाएं, फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम एंड आई हैव बजट का जो एक्सपेक्टेशन है वो भी मेरे को आपके साथ में शेयर करना है, सो आई विल नॉट बी टेकिंग योर क्वेश्चंस फर्दर, राइट। सो लेट्स से the left hand side is Tata Steel and the other side you will see is my Nifty metal का chart. Let me again load it. Tata Steel, right, and I'm invested, right, already. So disclaimer दे देता हूँ पहले आपको, I'm already invested in this. So now you will see metal as well as Tata Steel. You can see that metal is a range bound right now, और ये range तोड़ना जरूरी है इसका, right. So 5,900 के आसपास में ये range एक बार टूटेगी तो then you will see Tata Steel also flying upside, right. Almost the 500 point over 1,000 is almost you can say 50% upside Tata Steel में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो I'm positive about it. Dexter ONGC is a good stock. हमारा we have shared that detail in I think STI group. Get into that, study about that. Target 1 already hit हो गया है, 50% मैंने already book कर लिया है ONGC में. So I am holding another 50% to book the profit once it reaches the distribution zone. Distribution zone में बता देता हूँ कौन सी zone में आपको करीब distribution आता है, बल्कि इनफैक्ट देखो मैं मिस आउट कर गया फ्राइडे के टाइम पे, इट्स ऑलरेडी रीच्ड डिस्ट्रीब्यूशन जोन एज वेल, राइट। सो 175 का हमारा टारगेट था, 175 इसने हिट किया है फ्राइडे को, सो दैट मींस अनदर प्रॉफिट बुकिंग। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन नाउ, जैसे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन में जाती है, जो प्रोफेशनल्स हैं दे विल स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट, बट स्टॉक
अभी strong है, so no issues, nothing to worry about here in this stock, ONGC में. Okay, last question I'm taking from Sanjay. Vardhaman Textile posted excellent result, looks cheap. I had bought it. What is your advice? So, Sanjay, I have booked my profit almost in 90% in Vardhaman. I had been invested for last few years. बहुत low level से मैंने खरीदा हुआ था, and 2,800 के आसपास में I found the price was good. Profits were more than 150%. So, अभी मैं बैठा हुआ हूँ और आपने देखा होगा कि उसके बाद में 2400 तक आ गया VTL, राइट? सो अगर आप इन्वेस्टेड हो, यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड. इफ यू आर टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल स्टिल डू गुड. मेरे को भी मेरा बैलेंस शीट बनाना होता है, तो इसके लिए मेरे को प्रॉफिट बुक करना, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट था. इसके लिए मैंने ये जैसे एक ये जोन में आया था, इसने बेयरिश साइन दिया, आई जस्ट, ये मेरा ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें मैं एंट्री एग्जिट लेता हूं, तो यहाँ मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया था. नाउ इट्स गेटिंग अ गुड सपोर्ट एट 50 पीरियड मूविंग एवरेज. अगर ये मूविंग एवरेज टूटता है तो यू माइट सी 2100 के आसपास में ये स्टॉक आएगा. दैट्स अ गुड प्राइस टू बाय. And if that level also breaks, that will be 100 days moving average. अगर it breaks that, you will see 18,000 के आसपास में, sorry 1800 के आसपास में. 1800 आता है तो that's excellent price. You can definitely look for buying it, right? Sandeep Kumar ji, I have already given my view about the Reliance. It's not a value buy. It is more of a growth buy. You can always get into it. Yeah, guys, I'm sorry. There are so many questions. I need to close this session, and there is a perspective of budget we need to discuss. That will take 5 to 6 minutes, or maybe a little more than that. So I'll not be able to take more questions except this last question by Yogesh Raut. Right? Yogesh is my student. I really appreciate. He's been a very good trader. So I have already given my view on PSU, Yogesh. Yeah. Watch out this video again, right? BOB का भी मैंने व्यू दे दिया आपको. So मैंने मेरा व्यू दे दिया already, ठीक है ना? All right. So let's look at the market once again, and then from there we can Nifty का chart लेते before we close the session. And see once again, we saw what is happening in the market, right? We saw the correction, we saw, the up move. Now the budget will be driving. Next, जो फरवरी का move होएगा, वो budget will be driving, right? So what kind of budget are we expecting? सवाल ये है, right? So we saw that government has collected a lot of taxes, GST record high है, advance tax record high है, corporate earnings record high है. In fact, advanced tax 90% additional 90% growth हुई हमारे उसमें economic growth है. There are 40 plus unicorns which are coming up and they are doing well. Apart from that, more than हमने जो IPO में भी ये financial year में देखा 1 लाख करोड़ के ऊपर तो हमारा collection सिर्फ IPO में हुआ है. SIPs are doing very well, so investment बहुत ज्यादा हो रहा है. Retail का participation stock market में बहुत ज्यादा हो रहा है. So all that is good about the. So what does this provide government? This provides a lot of revenue to government, right? क्योंकि tax collection जैसे भी अगर आप STT देखोगे वो भी बहुत ज्यादा collection हो रहा है. Stamp duty, registration, everything is increasing. So government के पास में दो options है अभी. एक तो जो extra income आई है इससे इसको spend करे और development के काम में लगाए. एक option. Second कि जो गवर्नमेंट का डेफिसिट है विच इज आई थिंक 15 लाख करोड़ के आसपास का, वो डेफिसिट को कम करे और बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करे. सो व्हाट गवर्नमेंट विल डू डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट्स थॉट. व्हाट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज गोइंग टू बी पॉपुलिस्ट बजट. पॉपुलिस्ट बजट क्यों? 5 स्टेट में हमारी इलेक्शंस है. यूपी में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है और एक फार ईस्ट में है, राइट? तो that means government needs to please the voters as well. That's part and parcel of any government, is part and parcel of the game. So populist government का मतलब क्या? populist budget का मतलब क्या होता है? जो नौकरी पेशा है उनको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा. इसका मतलब उसमें कुछ जो उनकी टैक्स लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी, राइट? एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ा दी जाएगी. दूसरा
अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो शायद वर्क फ्रॉम होम में जो एक्सपेंसेस होते हैं, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पार्ट ऑफ एसेट जो आप खरीदते हो, कंप्यूटर वगैरह घर पे, फर्नीचर वगैरह, उसमें शायद थोड़ा डेप्रिसिएशन देना चालू करें. सो दैट इज अनदर expectation from the budget. And since the government is collecting good tax, I believe that government will not be imposing any new taxes, right? So अगर आप लास्ट बजट की बात कर रहे हो जहां पे ऑलमोस्ट हमने 4.74% की ग्रोथ देखी निफ्टी में उस दिन, तो वो इसके लिए थी बिकॉज देयर वाज नो न्यू सेस, राइट? डिस्पाइट वी वर गोइंग थ्रू द कोविड पेंडेमिक, we did not see the finance ministry saying that they will be adding up any new cess, and that's what the market celebrated. So this time also there will be new taxes. I think then the market will be zooming up because of that also, right? अच्छा, कॉर्पोरेट लोग के लिए या कंपनीज के लिए एंड द बिजनेसमैन के लिए क्या बेनिफिट हो सकते हैं यहाँ पे? एक तो जो ईसोप के टैक्सेस जो होते हैं ना, उनका डिफरमेंट होता है, मतलब इमीडिएटली ईसोप पे टैक्स नहीं लगते. सो दैट will happen in this budget. The other thing what I am expecting from the budget is जो डिजिटल करेंसीज हैं, क्रिप्टो होने दो या अदर डिजिटल करेंसीज हैं, उनके ऊपर भी कुछ न कुछ लेजिस्लेशन में आना चाहिए, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एम्बिग्विटी देयर, राइट? तो एंड आपको पता है कि जो रिटेल वाला है वो तो अंधाधुंध ट्रेडिंग कर रहा है और so called investment भी कर रहा है, right? So there should be that clarity in this budget. Apart from that, I believe either the STT should be removed, because STT tax जो कि securities transaction tax है और commodities transaction tax है, दोनों taxes were introduced a long time back after removing long term capital gain. But सीतारमन जी ने, मतलब लास्ट की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, एसटीटी तो लेके आए थे चिदम्बरम जी, बट इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी लगा दिया. दैट सीम्स टू बी वेरी लॉजिकल एंड इट्स नॉट अ प्रूडेंट, राइट? सो मेरे ख्याल से या तो एसटीटी रिमूव करना चाहिए या ये एसटीटी को इन लोग को टैक्स पेड में दिखा देना चाहिए. दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, राइट? सो दैट शुड कम एज अ रिबेट. So that is what is my expectation on STT and commodities transaction tax, right? It should be considered as a tax paid or it should be removed. अगर long term capital gain रखना हो या फिर long term capital gain हटाओ. Another reform in term of the securities market or the stock market, what I'm expecting is there should be parity between the capital gain from unlisted shares or the listed share. There is a disparity in them. So वो भी एक यहाँ पे government should be doing this time, because a lot of presentations have happened to the government of India from the capital markets, and they should be paying a heed to it. And my also another expectation is जो production linked incentive scheme government ने launch की है, that is right now in textile industry or pharma industry या electronic industry में, semiconductor industry में, the scope of that should be expanded to cover more sectors, right? जैसे API है, इंडिया में API प्रॉफिट मेकिंग बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं होता है, इसके लिए कम लोग हैं उसमें. सो बट विदाउट API फार्मा सेक्टर कैन नॉट डू. सो वी हैड सीन द क्रंच ऑफ API. चाइना वाज प्लेइंग ड्रामा ऑन दैट. सो और सेक्टर्स को लेना चाहिए है LPI में in this budget. So that is one more expectation from this budget. Now, there should also be tax relief to the companies which are really required to look after the public, स्पेशली चाहे वो API होने दो, चाहे वो फार्मा हो रहे दो, इनके जो R&D में खर्चा हो रहा है उसको टैक्स एग्जम्पशन देना बहुत जरूरी है. सो दैट विल गिव द बूस्ट टू वी आर अ गुड एक्सपोर्टर ऑफ फार्मा, बट API में हम लोग कमजोर हैं. तो वो एक एक्सपेक्टेशन है इस बजट से हमारी. देन एज almost all European and American or South American countries have made a China +1 policy. तो इस पॉलिसी का बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए, और इस अपॉर्चुनिटी के रहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड बी प्रमोटिंग एक्टिविटीज और द प्रोडक्शंस जो कि
एक्सपोर्ट में हमको रेवेन्यू क्रिएट करें, दैट मीन्स हमारी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर कम हो जाएगी, राइट? सो एज ऑफ नाउ आवर रुपी हैज वीकेंड अगेंस्ट डॉलर. सो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो देन इन दैट केस हमारा रुपीज स्ट्रांग होएगा. So that government should be definitely doing something or other in this budget to take that opportunity and encash it, right? And of course, in this budget, the sectors which will be pushed by government are infra, affordable housing, pharma, including API, and semiconductor and electronics के ऊपर तो बात चल रही है already. So that's already in. It's a known fact. The government is already paying a lot of attention to it, right? So these are some of the expectation the people have got from normal life as well as from the capital market, and that's my expectation as well. I hope this these reforms or these budget benefits, or the benefit of government earning a lot of revenue, a lot of taxes, advancement in taxes will definitely percolate to the general public, and the general public will be benefited from it. The industries will be benefited from it. So will be the market, right? So will be you and me. So keep on investing, friends. Keep on learning. That's the only way you and me can grow. That's my small effort to pass on whatever I learned, whatever research I do to the friends and the community I have in the stock market. So thank you very much for attending this session, and hope this session has brought some clarity to you in terms of the stocks, in terms of the geopolitical scenario, in terms of the budget, in terms of what are pros and cons at this point of time related to the stock market. I hope you will think over this weekend about all these things and invest prudently. I also invite you to share this video with your friends and family members who can also be benefited, from the quality knowledge. Thank you very much. Good night. Have a nice weekend. Take care of yourself, your health, and your wealth.